Quran chapter 74 verses 22 to 30. Title is What Did the Disbeliever Did? Lesson 3361. Chapter Muddassir, that is the clothed one. I seek refuge in Allah from Satan, the outcast. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Verse 22. Then frowned he and showed displeasure. Verse 23. Then turned he away in pride. Verse 24. And said, This is not else than magic from of old. Verse 25. This is not else than speech of mortal man. Verse 26. Him shall I fling unto the burning. Verse 27. What will convey unto thee what that burning is? Verse 28. It leaveth not, it spareth not. Verse 29. It shriveleth the man. Verse 30. Above it are 19. Commentary. It is commanded that disbeliever, that is Walid bin Mughira, set up an opinion in his mind. Then he lifted up his eyes and saw, creased on his forehead, and was ill-humoured, turned his face and began to be arrogant. Then he said, This, that is Holy Quran, is not but magic imitated from ancient people. This is not but the word of a human being. After that it is commanded, Where can he go? I will punish him due to his arrogance and cast him into the fire of the hell. What do you know about the fire of the hell? That is not an ordinary fire, but is so much sharp which lets nothing remain and leaves nothing unburnt. Moreover, 19 angels, peace be upon them, have been keeping a watch over it. This is a description concerning the punishment of a particular man. However, every such person is included in it who is born from the mother's womb, alone and poor. Then he becomes rich and landlord by the grace of Allah Almighty, who gives him many sons and abundant land. Common people follow him, and he has many servants for own service. His sons are along with him every time. If such a person jests after hearing the verses of Holy Quran and says carelessly after knowing the blessings of the paradise, all such blessings will be provided to me as I have been enjoying in this world. The end of all such people will be as explained above. اردو میں سماعت فرمائیے. عنوان ہے منکر نے کیا کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبكي ولا تذر لواحة للبشر علیہا 19. پھر تیوری چڑھائی اور منہ ستھایا، پھر پیٹھ پھیری اور غرور کیا، پھر بولا اور کچھ نہیں یہ جادو ہے، چلا آتا ہے اور کچھ نہیں یہ آدمی کا کہا ہوا ہے، اب اس کو آگ میں ڈالوں گا، اور تو کیا سمجھا کہ آگ کیسی ہے، نہ باقی رکھے اور نہ چھوڑے، آدمیوں کو جلا دینے والی، اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں. لواحۃ جھلس دینے والی، جلا کر بگاڑ دینے والی. مبالغے کا صیغہ ہے لام باؤ ہے سے. لوہن کے معنی بگاڑ دینے، متغیر کرنے کے. ارشاد ہے
उस काफिर ने सोच कर एक राय कायम की, फिर निगाह उठा कर देखा, फिर माथे पर बल डाला, फिर सुरशरू हुआ, फिर मुंह फेर लिया और अकड़ने लगा, फिर बोला कुछ नहीं, ये तो जादू है जो पहले से नकल होता चला आ रहा है, ये तो आदमी ही का कलाम है और किसी का नहीं। खैर जाता कहाँ है, इसकी इस गुस्ताखी की उसे मैं ये सजा दूंगा कि उसे दोज़ख में डाल दूंगा, और तुम्हें क्या मालूम कि दोज़ख क्या है? वो कोई मामूली आग नहीं बल्कि ऐसी ही तेज़ आग है कि सब कुछ जला डालेगी और कुछ भी ना छोड़ेगी, जला जला कर बदन का हुलिया बिगाड़ देगी। फिर उस पर 19 निगाहबान पहरा दे रहे हैं। ये एक ख़ास शख्स की सज़ा का बयान है, लेकिन इसमें वो हर शख्स शामिल है जो माँ के पेट से अकलौता और मुख्तस पैदा हुआ। फिर वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फज़ल से बड़ा मालदार और दौलतमंद हो गया और उसके बहुत से बेटे भी हो गए। ज़मीन जायदाद दूर दूर तक फैली पड़ी हो, लोग उसके इशारों पर चलते हों, नौकर चाकर काम में लगे हों और आप फरागत की ज़िंदगी बसर कर रहा हो, बेटे हर वक्त उसके साथ हाजिर हों। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयतें सुनकर उनकी हंसी उड़ाए, जन्नत की नेमतें सुनकर बेपरवाही से कहे कि ये सब नेमतें मुझे मिलेंगी जैसे यहाँ मिल रही हैं। ऐसे लोगों का वही असर होगा जो यहाँ बयान किया गया है। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम।